व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष फ्रॉम द रसगुल्ला आर्ट्स चैनल से। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे। तो गाइस प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ बिकॉज ओनली वन वे टू ब्रोक डाउन द कोरोना वायरस से। तो गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज स्टे होम। और गाइस अगर एक आप आर्टिस्ट है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आप घर पे रह के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और अदर वर्क भी आप सीख सकते हैं। तो गाइस प्लीज स्टे होम। तो गाइस अब वीडियो की बात करें तो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था कि अब मैं वीडियो के साथ साथ आपको कुछ टिप्स और टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो गाइस इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया है। तो गाइस आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि अगर एक आप आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये गलती मत करिए। तो गाइस इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया था। सेशन में मैंने ये ड्राइंग किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट में मैंने ये ड्राइंग बनाया था। तो यहाँ पे मैंने रियलिस्टिक वर्क और यहाँ पे मैंने एक्रेलिक वर्क का यूज़ किया, एक्रेलिक वर्क किया था। तो ये ड्राइंग ओवरऑल तो अच्छी बनी है, लेकिन एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें थोड़ी छोटी गलतियाँ हुई है। तो ये गलतियाँ के नोटिस करके आप भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप मेरी पहली गलती की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन शेपिंग अच्छी नहीं है, ये लाइन शेपिंग एक्यूरेट नहीं है। तो आप इससे भी अच्छी लाइन शेपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो गाइस अगर एक आप आर्टिस्ट है तो आपको मिनिमम दिन में आधा से 1 घंटा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका वर्क इम्प्रूव होगा। तो गाइस डेली प्रैक्टिस इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन आर्ट वर्क। अगर आप दूसरी गलती की बात करें तो इस ड्राइंग में शेडिंग ओवरऑल अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छी शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शेडिंग में HB 2B और 6B पेंसिल का यूज़ किया है और हेयर में चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। और हेयर को हाईलाइट करने के लिए मैंने वाइट पेन का यूज़ किया था, जिससे अच्छी तरह हेयर हाईलाइट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस आप इससे भी अच्छी शेडिंग कर सकते हैं और इससे भी अच्छा रियलिस्टिक वर्क बना सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक ही ऑप्शन है कि डेली प्रैक्टिस करिए और अपने वर्क को इम्प्रूव करिए। और तीसरी बात करूँ तो ये स्केच बनाने में मेरे को तकरीबन 15 से 17 घंटा लगे, जो ये स्केच 10 से 12 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए भी आपको बता दूं तो आपको डेली प्रैक्टिस ही करनी होगी कि ओनली वन ऑप्शन दैट यू हैव, डू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर वर्क। तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। और इसके बाद का वीडियो में डूडल वर्क कैसे बनाते हैं और डूडल वर्क क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और अगर आप ऐसी ड्राइंग बनाते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। मैं डेफिनेटली आपका वर्क रिस्टोरी करूँगा। और गाइस अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ये ड्राइंग का पूरा टाइमलेस वीडियो मैंने इसके बाद ही डाला हुआ है। तो कंटिन्यू ये वीडियो, तो आप वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो कैसा लगे वीडियो को तो कमेंट मेंशन कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू गाइस।
Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out, coming to me crying, saying